present. Question hour. Question number 31. Shri Jawahar Sarkar. Honorable Minister. Sir, the reply is laid on the table of the House. Supplementary 1, Shri Jawahar Sarkar. Sir, I had asked for a simple reply as to whether the variable characteristic of renewable energy, as you know, solar energy goes up in spikes and then falls down. As you know, wind energy also has its variations. The renewable energy per se has a strong variability factor, which the Minister himself has mentioned. But the answer to my question is no. There is no problem of grid stability. Would the Minister like to hold on to the statement which is contradicted by several issues mentioned in his own reply? The reply is unusually big, and there it mentions that generators are going out of grid. So would the Minister like to clarify, or will the Minister like to stand by such a categorical statement? Honorable Minister, and both of you happen to be former bureaucrats. And Mr. Chairman, sir, we also happen to be batchmates. Mr. Chairman, sir, what has been, if my batchmate takes care to read what I have written carefully, he'll find that I have said that that the grid as of today is totally stable. It is true that renewable energy is variable, but there are ways of managing it, and that's what we are doing, and that is why our grid is stable. God forbid if our grid became unstable because we have one grid connecting the whole country will be aware of it. I mean, did any of the members feel any instability at all in the grid? They would not have. That's because we are managing the variability by a number of methods. Let me just finish. By a number of methods. One way of managing variability, number one, Mr. Chairman, sir, is that we have set up 13 renewable energy management centers, whose sole task is to keep monitoring the generation in various, from renewables, especially solar and wind. Solar and wind are the variables in different corners of the country. Now, and then we have hydro, and we have flexibilized our thermal capacities. 5,000 megawatts of thermal capacity has been flexibilized to ramp up and ramp down as per requirement. And they are all on automatic generation control so that the ramp up and ramp down happens automatically. And that's why you don't see any flickers, despite the fact that you have so much of renewable energy being fed in. So as of now, the grid is totally stable. We are managing the variability. That's the question. That's the answer. Second supplementary, Shri Jawahar Sarkar. I had asked specifically about renewable energy system-based grid, RES, GTS. I had asked specifically about the health of DISCOMs, which are in a terrible state. Everybody knows that DISCOMs are in a terrible state, but the Minister has chosen not to reply to RES, GTS, number supplementary. one. And number two, on DISCOMs, he replies to me on GENCOs. I asked for scooters. Sir, your supplementary. So my supplementary is, what is his position on the new technology of RES, stable renewable energy grids, and on DISCOMs, the health of which is going through a terrible phase. The DISCOMs are unable to honor their commitment because their bills are delayed. Instead of going in for DISCOMs, he has gone in for GENCOs. Honorable Minister. Mr. Chairman, sir, again, I think I'll have to correct my learned colleague, batchmate. Number one, there is no such thing called RES, GGS. There is no such thing as renewable energy source grid connected generation system. There is no such thing. What happens is that renewable energy has inverters. I mean, renewable energy capacities have inverters, and they are fed into the grid, which the dispatch centers manage the variability in conjunction with hydro and thermal. We are also adding storage capacities. So that storage capacity is also something which
responds to the variability. Now, as far as the second thing is concerned, as to his question and reply, he says that he had asked a question about the viability of DISCOMs, and the reply talks about something else. Now, I'll just read out the question. Now, his question says whether the very delayed payments are received and passed on by DISCOMs continue to create deep financial difficulties for renewable energy. I have responded to that. I have pointed out that the total outstanding dues of all GENCOs, including renewable energy, was 1,39,000 crores, and that has been brought down by the methods which we have employed, by the rules we have put in place. That has been brought down to about 42,000 crores, from 1,39,000 crores to 42,000 crores, and that's legacy dues. The current dues are played totally up to date. So that's responding to his question. Now, he wants to know about the health of the DISCOMs. I'm happy to inform him and the learned house that the health of the DISCOMs has improved tremendously under this government. In 2014, the AT&C losses of DISCOMs was 27%, Mr. Chairman said. Today, it's 15.41%. So that's the indicator of the health of the DISCOMs, how it has improved. Thank you. Siri, one second, Mr. Sarkar, 1 second. The two batchmates may interact over a cup of coffee. Shri Kartikeya Sharma. Shri Kartikeya Sharma. No, sir, nothing will go on record. No, nothing will. Shri Kartikeya Sharma. Sir, thank you, Chairman, sir. Through you, I'd like to ask the Honourable Minister, the current provisions for small-scale solar plants and renewable energy-based electricity plants to connect with the grid. What assistance is provided by the Ministry, sir? Honourable Minister. Sir, but keep in mind my coffee aspect. Not at all. I'll be very happy to host it. Mr. Chairman, sir, we have come out with something called the Green Open Access Rules. Under the Green Open Access Rules, we provided that any capacity above 100 megawatts can connect to the grid and get open access to wherever they want to transfer the energy. And the transmission will also be free up till 2025, totally free, June 25. If it is installed up to June 26, it will be 75% free. If it's installed up to June 27, it will be 50% free. So that's the provision. Dr. Ami Yaznik. Sir, I would like to ask the Honourable Minister that your reply is very elaborate. It also mentions the RMECs, and it also mentions the dues of the DISCOMs that have gone down. I've seen the policy initiatives in the last 2-3 years, and they're bearing some kind of a fruit. But I would like to know whether, given the intermittency, the variability of the renewable energy, and the challenges for the common grid, whether the emission trading or the emission part and real forecast is being taken care of. And are we going to strengthen that in the short-term plan so that we have the grid strengthened for the renewables to enter in the main grid? Mr. Chairman, sir, that's a very pertinent question. And we have put in place measures for exactly what the Honourable Member, the learned member has suggested. We have set up 13 renewable energy management centers for this very purpose, for forecasting so as to ensure accurate scheduling. The generators have also been put under the obligation of putting up forecasting systems themselves. So by and large, our scheduling continues to be quite accurate, despite the variability. And of course, we are adding storage by and by. Currently, storage is expensive. Mr. Chairman, sir, and that storage is actually the answer to the variability. That's the real answer to the risk, because then you can store. The variability gets cancelled out. But it's expensive. We had a bid for about 1,000 megawatt hours of storage. The rate came to about 10 rupees per kilowatt hour. That means for making solar, it comes to about 2 rupees 50 paise per unit. To store it for 1 hour, it costs 10 rupees. So that's how expensive it is. Pumped hydro is cheaper, so we are adding lots of pumped hydro. We already have about 4,740 megawatts of pumped hydro in operation. By 2030, we'll have about 26,690 megawatts of pumped hydro, which comes out to about 175,000 megawatt hours of storage. We'll add battery storage as well, Mr. Chairman, sir. Currently, our
battery storage capacity is 160 megawatt hours. By 2030, it will be 12,360 megawatt hours. Shri Ashok Kumar Mittal. 178 गीगावाट है, जिसमें 72 गीगावाट सोलर से आती है और 44 विंड से आती है। और भारत सरकार का जो 500 गीगावाट का लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए हर वर्ष 45 से 50 गीगावाट की कैपेसिटी हमें ऐड करनी होगी। दूसरी तरफ सरकार द्वारा सोलर पीवी पर 40% और सोलर पीवी सेल्स पर 25% की बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई हुई है। और जब हम 500 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड करेंगे तो हमारा एग्जिस्टिंग ग्रिड सिस्टम भी फुली इक्विप्ड होना चाहिए इस रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करने के लिए। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है आपके थ्रू सर कि सोलर एनर्जी की जो कॉस्ट की कीमत बढ़ती जा रही है और कैपेसिटी एडिशन के बाद वन नेशन वन ग्रिड के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरेज जैसे पंप स्टोरेज और बैटरी स्टोरेज को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार क्या प्रावधान कर रही है? Honorable Minister. Mr. Chairman, sir, I have already pointed out that we are adding storage. To respond to his the second part of his question first, we are already adding storage. For this 1,000 megawatt hours of storage which we bid out, we are providing VGF. Then we have also provided for VGF for 4,000 megawatt hours of storage. Now this is for battery storage. We believe that for pumped storage, no VGF will be necessary because the price of storage from pumped hydro comes to about 5 rupees approx. So that is bearable. You have 5 rupees for storage and 2 rupees 50 paise for solar. So the cost, delivered cost will be about 7 rupees 50 paise. That is bearable. And we are adding storage. Now he mentioned the customs duty. Now that was necessary, Mr. Chairman. It was necessary because when we started our journey, when we started expanding our renewable energy capacity at a very rapid pace, one of the fastest speed, our pace for capacity addition, renewable energy capacity addition was one of the fastest in the world. When we started, we had a manufacturing capacity of about 20 gigawatts of modules in our country, 20,000 megawatts. And so that meant only a part of our requirements. Almost about 90% used to be imported. Now the country we were importing it from, they started dumping in order to kill off our nascent manufacturing industry. So we put safeguard duties. That didn't work, so we put that customs duty. And as a result of that, Mr. Chairman, sir, you'll be happy to know, and the House will be happy to know, that our capacity, domestic manufacturing capacity, has gone up from 20 gigawatts, 20,000 megawatts, to 50,000 megawatts. And it will go to about 100,000 megawatts by the end of 2030. We have already started exporting to other countries. We shall be very soon one of the major exporters as well, apart from meeting our requirements. Question number 32, Dr. Lakshmikant Vajpayee. Honorable Minister. Supplementary 1, Dr. Lakshmikant Vajpayee. माननीय सभापति जी, जन औषधि परियोजना के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपया बचा है सामान्य जनमानस का। 50 से 90% दवाएं सस्ती दी हैं और 10 लाख लोग नियमित जन औषधि केंद्रों के ग्राहक हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि मेरा मूल प्रश्न था कि क्या जन औषधि केंद्रों पर आयुर्वेदिक औषधियों को जो महंगी हैं उनको भी शामिल करने पर विचार होगा। मंत्री जी ने, और मैंने उसका पूछा था योजना क्या है, मंत्री जी ने जिन दवाओं का नाम लिया है वो दवाएं बहुत सस्ती दवाएं हैं जो आम जनता की पहुंच में है। मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या स्वर्ण यौगिक जैसे महंगी औषधियों को भी जन औषधि केंद्रों पर आयुर्वेदिक औषधि की सूची में शामिल करके जनता को आयुर्वेदिक औषधि सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का क्या प्रयास करेंगी? माननीय मंत्री जी। महोदय, वरिष्ठ सदस्य है और उन्होंने
आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर साहब भी है और उनका चिंता गरीबों के प्रति स्वाभाविक है। और भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आने के बाद ये परियोजना 2008 की थी महोदय। 2014 तक उस तत्कालीन सरकार में उदासीनता के कारण केवल 72 ही केंद्र भारत देश के अंदर कार्य करते थे। 10 साल के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यशैली के कारण आज भारत में 10,500 जनऔषधि केंद्र, करीब 1963 प्रोडक्ट्स बास्केट और 293 सर्जिकल कंज्यूमेबल्स की बास्केट है महोदय। और माननीय सदस्य का चिंता जो आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो उसको इंक्लूड करने का जो बात है, तो हमारा पीएम बीजेपी ये संस्था सोसाइटी का एक्ट के अंदर 1860 के एक्ट के अंदर इसको नोंद किया गया और उसको एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है महोदय, सीईओ है और वो पीएम बीजेपी लगातार मार्केट के अंदर कौन सा दवाइयों का ट्रेंड देखती है और वो ट्रेंड देख करके सस्ता में गरीबों को उपलब्धि करा के लेने के लिए प्रक्रिया करती है। मैं समझता हूँ ऑलरेडी हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन्स करीब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स च्यवनप्राश जैसे 500 ग्राम और 1000 ग्राम के और त्रिफला, शिलाजीत, अश्वगंधा, आयुष रक्षा किट, बाल रक्षा किट, आयुष 65 टैबलेट्स ऐसा लगातार इंक्लूड करते जा रहे हैं महोदय। तो मैं समझता हूँ जब मार्केट ट्रेंड के अंदर स्टडी वगैरह होगी तो निश्चित रूप से आपका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी। माननीय सभापति जी, मेरा प्रश्न था और माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर छपा हुआ दिया था उसी को पढ़ दिया है। मैं आपके माध्यम से पुनः एक बात जानना चाहता हूँ कि वो जो आयुर्वेदिक दवाएं सामान्य जनमानस के परिधि से दूर हैं, उनके भले वो सोसाइटी में हो, एक्टिव सोसाइटी के अधीन एलोपैथिक दवा भी दी जा रही हैं, तो सोसाइटी में निर्णय कराकर क्या सरकार उन स्वर्ण यौगिकों को जो बहुत महंगे मिलते हैं, जनता के लिए लाभकारी होते हैं, जिनका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं होता, क्या सरकार विचार करेगी? महोदय, मैंने संक्षिप्त में उसको उल्लेख किया है। हमारा पीएम बीजेपी मार्केट के अंदर आयुर्वेदिक को लेकर के ही सर्वे करती है, जो ट्रेंड मार्केट में क्या चल रही है, तो उस मार्केट का ट्रेंड के हिसाब से हम उसको इंक्लूड करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप में हमारा मार्केट ट्रेंड में उसको लेकर के हमने प्रयास करेंगे। धन्यवाद। श्री राकेश सिन्हा। जन औषधि केंद्र एक बड़ी क्रांतिकारी योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका विस्तार किया है। मुझे स्वयं इसका अनुभव हुआ जब मैंने एक जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया और जब मैंने पूछा तो पता चला कि उसमें जो दवाइयाँ बाहर 3,500 की मिलती हैं वो 250-300 रुपये में लोगों को मिल रही हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी 10,500 जन औषधि केंद्र हैं। इस जन औषधि केंद्रों में क्या ट्यूबरक्लोसिस की जो दवाइयाँ होती हैं उसका कोई एक पैकेज बनाकर दिया जाएगा जिससे कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट, टीबी के पेशेंट जन औषधि केंद्र में सुविधाजनक तरीके से उस पैकेज को ले सके? माननीय मंत्री जी। अन्य सदस्य टीबी औषध के बारे में उन्होंने बताया कि हमारा जो प्रोडक्ट बास्केट है 1965, उस बास्केट के अंदर कोई भी मरीज स्वयं केंद्र पर जाकर के खरीद सकता है। ऐसा कोई किट बना के देने का ऐसा कोई प्रोविजन अपने पास है ही नहीं है। अगर उनको जिस हमारा पास अवेलेबल प्रोडक्ट्स है वो सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर सस्ती में आप वो खरीद सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान। Thank you, Chairman, sir. Sir, given the commercialization of the Ayurvedic industry and the challenges in ensuring safe usage, what has the government done to include Ayurveda in the National Pharmacovigilance Program for effective monitoring and reporting of adverse reactions? Is the ministry taking steps to formalize pharmacovigilance
in Ayurveda and educate practitioners and researchers about reporting adverse reactions, particularly with reference to presence of some minerals and metals in Ayurvedic medicines. Honorable Minister. माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए फार्माकोविजिलेंस के लिए है, लेकिन यहाँ जो बेसिक प्रश्न है वो भारतीय जनऔषधि परियोजना पर है, जनऔषधि केंद्र पर है, लेकिन भी मैं उसका भी रिप्लाई करूँगा। आवश्यक है कि सभी में फार्माकोविजिलेंस होना चाहिए, आयुर्वेद में भी होना चाहिए और उसके लिए भी सरकार निश्चित रूप पर कार्यरत है, लेकिन देश में हर नागरिक को सस्ती दवाएं मिले। और मोदी सरकार की रीति नीति और कार्य पद्धति रही है, मोदी जी ने कोई विषय को कभी टोकन में नहीं सोचा है, टोटल में सोचा है। और एक समय था, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर कोई कहते थे कि हमें एक हॉस्पिटल दे दो, तो उसको हॉस्पिटल दे दी जाती थी, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, टोटल अप्रोच के साथ मोदी जी ने हेल्थ सेक्टर को देखा और ये लक्ष्य पर आगे बढ़े। हेल्थ एक्सेसिबल होना चाहिए, हेल्थ अफोर्डेबल होना चाहिए। हेल्थ को एक्सेसिबल करने के लिए देश में 1,64,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज देश में कार्यरत है। वैसे ही जब हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाते हैं तो वहाँ डॉक्टर चाहिए, तो मोदी गवर्नमेंट ने देश में MBBS की सीट डबल करी। पहले 350 मेडिकल कॉलेज होती थी, आज 707 मेडिकल कॉलेज हो गई। देश में 1,07,000 MBBS की सीट हो गई, PG की सीट भी डबल हो गई, ताकि देश के आयुष्मान आरोग्य मंदिर और हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध हो। डॉक्टर उपलब्ध हो गए और लोगों को सस्ती दवाएं कैसे, सस्ती ट्रीटमेंट कैसे मिले, अफोर्डेबल हेल्थ केयर कैसे उपलब्ध हो। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले अमेरिका में ओबामा ने ओबामा केयर करके अमेरिका के 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी थी और ओबामा केयर योजना के रूप में सारे दुनिया में पॉपुलर हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में 12 करोड़, मैं आऊंगा क्वेश्चंस के रिप्लाई पर आऊंगा, 12 करोड़ इंपॉर्टेंट माहिती आपको मिल रही है, क्या दिक्कत है उसमें? आपका ये क्वेश्चंस का रिप्लाई तो मैं पहले ही दे दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ही साकेत गोखले, देश में 12 करोड़, you need to behave. Take your seat. The member is capable of asking questions. सर, please take your seat. देश में don't be indecorous. 12 करोड़ फैमिली यानी कि 60 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी देके देश में 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने देश के नागरिकों को दी है। वैसे ही देश के गरीब लोगों को सस्ती दवाएं मिले और बिना दवाई से कोई परिवार में कोई सदस्य के यहाँ मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। उसके लिए देश में 10,500 से अधिक जनऔषधि केंद्र चलाया जा रहा है ताकि देश में गरीबों को सस्ती दवाएं मिले। वैसे ही एक मेडिसिन क्वालिटी मेडिसिन हो और क्वालिटी मेडिसिन के लिए विजिलेंस सिस्टम हो, आयुर्वेद के लिए भी हो और एलोपैथिक के लिए भी हो। दोनों मेडिसिन क्वालिटी मेडिसिन मिले और डेटाबेस, उसके लिए डेटा क्रिएट हो, डेटा के आधार पर उसकी एफिकेसी तय की जाए और एफिकेसी के आधार पर उसका उपयोग हो, उसके लिए भारत सरकार ने सुनिश्चित करा है और ये कंटिन्यूस चलती प्रक्रिया है, वो कंटिन्यूस होती रहती है, हम उसके ऊपर काम करते रहेंगे। श्री विनोय विश्वम। Thank you, sir. Sir, my question is related to Kottakkal Ayurveda Shala. As the whole nation knows, it is the number 1 in the research and treatment of Ayurveda medicines in the country. Sir, I ask the government, will the government be ready to take the experience and the traditions of that Vedashala and its experience and experiments in the country for the use of the growth and development of the medical treatment in this branch of medicine for the whole nation as a whole? Thank you. Honorable Minister. क्वेश्चन तो प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र के हिसाब में है, तो उन्होंने इंस्टीट्यूशन का बारे में बात कर रहे हैं, तो संबंधित विषय उनको पहुंचा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 श्री विप्लव कुमार देव। ऑनरेबल मिनिस्टर, सप्लीमेंट्री 1।
श्री विप्लव कुमार देव। माननीय सभापति महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें एक समय देश में एक ही ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो कि दिल्ली में होती थी, और अटल जी के समय से लेके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद अब तक 22 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन पूरे भारत में दी गई है। इसमें 16 ऑपरेशनल है और 6 फुल्ली ऑपरेशनल है। मुझे मंत्री जी से पूछना है, ये जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन दिल्ली है, इसमें एक समय बिहार और उत्तर प्रदेश से बड़ी मात्रा में मरीज आते थे, उसका लोड बहुत बड़े मात्रा में होते थे, जिसके कारण से बड़े बड़े ऑपरेशन में लंबे समय टाइम लगता था। क्या सरकार के पास ये तथ्य है, ये जो अभी बिहार में ऑपरेशनल है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ऋषिकेश में भी ऑपरेशनल है नियर बाई दोनों, ये दोनों होने के बाद दिल्ली स्थित जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, इसमें पहले से लोड कमा है क्या नहीं मरीज का? ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो हमारे माननीय पूर्व सीएम रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने किया है। पहली बात तो मैं कहूँ कि दिल्ली एम्स के बाद जो एम्स गुवाहाटी के बारे में आपने भी किया है सवाल, तो देश को पहला, नॉर्थ ईस्ट को पहला एम्स मिला जो अप्रूव हुआ 2017 में, और उसके साथ जो 22 एम्स की बात कही, बिल्कुल हमारे लिए ये गौरवपूर्ण बात है कि एक एम्स के बाद हम 22 का अप्रूवल देके उसमें 6 फंक्शनल फुल्ली होके 16 एम्स में भी एक्टिविटी जैसे लर्निंग, टीचिंग, रिसर्च शुरू हुआ है। आपका कहना है कि क्या दिल्ली एम्स के बाद जो बन रहे हैं फुल्ली फंक्शनल हो रहे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ? मैं बिल्कुल तथ्यों के साथ आपको आदरणीय चेयरमैन सर आपके सामने रखना चाहती हूँ कि नंबर ऑफ पेशेंट जो थे, एक छोटा मैंने जो डेटा देखा कि जो सिंस 2019 ओपीडी जब दिल्ली एम्स में हमारी रहती थी अराउंड 66 लाख्स, तो वो एम्स शुरू होने के बाद जो आपने कहा ऋषिकेश के बाद, तो ऋषिकेश में वही डेटा देख रहे हैं तो वो लगभग आए हैं ओपीडी नंबर 26 लाख्स। तो इतने पेशेंट ने ओपीडी का बेस पे सर्विस लिया ऋषिकेश में। वैसे ही देखा जाए पटना को, तो पटना को भी ओपीडी हुआ है 29 लाख्स। तो इतने पेशेंट वही के वही एम्स होने के फंक्शनल फुल्ली होने के बाद इतने पेशेंट वहीं पे ओपीडी आईपीडी का फैसिलिटी ले रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही दिशा में स्ट्रेंथन किया है हेल्थ सेक्टर को, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, और एम्स का हमारा विशेषता यही है कि टर्शरी लेवल को हम उसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री विप्लव कुमार देव। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो नॉर्थ ईस्ट में असम के बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाले जो राज्य है त्रिपुरा है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जो पहली बार नॉर्थ ईस्ट में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशनल हुआ है। त्रिपुरा सरकार के तरफ से भी समय समय पर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए केंद्र सरकार के साथ वार्तालाप और पत्राचार हुआ है। क्या सरकार के अगले कोई बजट में त्रिपुरा के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन दिलाने की कोई योजना है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय चेयरमैन सर, एम्स के दिशा में लगातार हर एक को लग रहा है कि मेरे क्षेत्र में एम्स बने, क्योंकि बहुत ही बड़ा कैंपस, इतने सारे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स और एक अच्छी सुविधा। तो बिल्कुल आपने माननीय सांसद महोदय का कहना है त्रिपुरा के बारे में, लेकिन मैं जहाँ तक कह रही हूँ कि पहली बार नॉर्थ ईस्ट को एक अलग डिपार्टमेंट भी पहली बार मिला है, उसमें सभी विभागों से बजट भी जा रहा है। तो सर, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ सदन को कि जैसे मैंने कहा कि पहला नॉर्थ ईस्ट को एम्स असम गुवाहाटी मिला, वैसे ही पहला मेडिकल कॉलेज नागालैंड को भी मिला, हमारी सरकार ने दिया। पहला मेडिकल कॉलेज मिज़ोरम में भी दिया। और सर, मैं
अभी सिक्किम होके आई तो उन लोगों ने भी धन्यवाद दिया कि पहला गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सिक्किम को मिल रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट तो प्रायोरिटी है, लेकिन जो आपने त्रिपुरा के बारे में सोचा है तो बिल्कुल आपने पत्राचार भी किए थे और उसके आधार पर वहाँ पे अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिपुरा के लिए फेज़ 3 में हमने अप्रूव किया है बजट 150 करोड़, तो उसका काम सर जारी है। डॉक्टर केसी नो श्री केसी वेणुगोपाल। Thank you, Chairman. By the answer by the Honorable Minister, there are 22 All India Institute of Medical Science in this country. Last so many years, there are commitment from the Government of India that they are going to institute aims in the state of Kerala, which is not going to fulfill so far. Now the term of the government is already coming to an end. 6 years before itself, Honorable Union Health Minister promised in the floor of the House, next year we are going to give the aims to the state of Kerala. Whether the minister is aware of that promises, a commitment, what is the answer regarding the All India Institute of Medical Science to be instituted in Kerala state? Honorable Minister. माननीय चेयरमैन साहब, हम कभी वादा खिलाफी करने वाले लोग नहीं हैं। शिलान्यास भी हम करते हैं और लोकार्पण भी हम करते हैं। जब 2014 में हमारी सरकार बनी तब डिपार्टमेंट वाइज एक ही रेलवे में 2000 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसका शिलान्यास हुआ था, कभी लोकार्पण हुआ ही नहीं था। माई सेल्फ इज फर्टिलाइजर मिनिस्टर। मैं थोड़े दिन पहले कोरबा में गया था। 1971 में फर्टिलाइजर का प्लांट शिलान्यास हुआ था, आज तक उसका लोकार्पण हुआ ही नहीं 2023 तक। माननीय चेयरमैन साहब, हमने देश में देश में 22 एम्स बनाई है। देश के सभी राज्यों में देश के सभी नागरिकों के लिए हेल्थ फैसिलिटी उपलब्ध हो, हमारी प्रायोरिटी है और ये प्रायोरिटी के आधार पर हम 22 एम्स तक पहुँचे हैं। भविष्य में हम हमारा असेसमेंट के आधार पर उसमें आगे भी बढ़ सकते हैं, हमारी बहुत क्लैरिटी है और इसलिए हमने केरला में केरला की सरकार के द्वारा असहयोग होने के बावजूद भी भारत सरकार की हेल्थ की कोई योजना का वहाँ भारत सरकार के फॉर्मेट के अनुसार इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते होने के बावजूद भी हमने 4 मेडिकल कॉलेज केरला को दिया है। हम स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा सहयोग करते हैं और भविष्य में केरला के लोगों को टर्शरी केयर के लिए जो भी फैसिलिटी की आवश्यकता हो, मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटी की आवश्यकता हो, नई मेडिकल सीटें बढ़ानी है, भारत सरकार। Honorable Minister, the honorable member wants a specific response. Once, please. I'm here. Yes. चेयरमैन साहब, मैंने स्पेसिफिक ही रिप्लाई दिया है कि हम भविष्य में जिस स्टेट में एम्स नहीं है उसके पर हम प्रायोरिटी के आधार पर विचार कर सकते हैं। डॉक्टर शांतनु सेन, डॉक्टर शांतनु सेन, डॉक्टर शांतनु सेन, Kerala is a model. Dr. Shantanu Sen. You have penalized the Kerala. Ask your supplementary, Dr. Shantanu. Thank you, respected Chair. Chair, it's really very good to learn, especially for publicity purpose. Your supplementary, I am coming to the question. Prior to the Parliament election, that so many AIMSs are coming up, like the mastering of medical colleges. Through you, my supplementary question to my learned minister is, sir, as a medical professional and as a member of Parliamentary Health Standing Committee, Dr. Shantanu Sen, please, your supplementary. I am coming to the question, sir. While visiting several AIMS in different parts of the country, we have seen the infrastructures of those AIMSs are far behind from what it is supposed to be. Yes. There is acute shortage of medical faculties, clinical staffs and non-clinical supplementary. Staff. If you come to our state of West Bengal, there is one AIMS which is suffering from acute crisis and shortage of staff, sir. Sir, my question to my minister is, why, like Madam Mamata Banerjee in our state of West Bengal,
who in one hand developing the medical colleges and coming up with the several medical colleges. You said publicity, and you are at developing it the now. infrastructures. Why my minister and my department Honorable Minister. does not prioritize the development of infrastructure? Chairman sir, Shanmuj, I am giving reply. Chairman sir, उसकी बात सही है. उनकी बात सही है कि कई एम्स में, कई मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी है, हम स्वीकार करते हैं. सवाल ये है कि वर्तमान समय में हेल्थ सेक्टर में जो कमियां थी, हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज बढ़ाई. सडन 10 साल में मेडिकल कॉलेज डबल कर दी. 10 साल में 22 एम्स बनाई. इतना बड़ा हेल्थ फैसिलिटी जब हम क्रिएट कर रहे हैं, तब थोड़ी सी फैकल्टी की भी दिक्कत हो, थोड़ी सी मेडिकल स्टाफ की भी दिक्कत हो, स्वाभाविक है. लेकिन जैसे जैसे सीट बढ़ी है, वैसे वैसे फैकल्टी उपलब्ध हो रही है. और इतना बड़ा सेटअप और इतना बड़ा एम जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो 15,000 करोड़ रुपीस के खर्च से बन रहा हो, क्या आज हम बनाए 24 आवर्स में तुरंत ही आप अपेक्षा रखेंगे कि सारी फैसिलिटी तभी पूरी हो जाए? आप तो डॉक्टर है, सम्मानित डॉक्टर होने के नाते आप भली बात ही समझते हैं कि कोई बड़ा इस्टेब्लिशमेंट हम खड़ा करते हैं, धीरे 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 अपग्रेड करके मूल स्थिति में आता है. मैं अपेक्षा करता हूँ माननीय सभी सांसदगण ने जिसके स्टेट में या तो जिसके लोकसभा क्षेत्र में इस टाइप का सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप विजिट करते रहिए. आप डॉक्टर है तो मार्गदर्शन करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए. भारत सरकार उसको हर संभव इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी नहीं रहने देगी, ताकि भविष्य में एक बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट हो और देश के और जनता के लिए उपयोगी हो. श्री संदीप कुमार पाठक. श्री संदीप कुमार. थैंक यू ऑनरेबल चेयर सर. सर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर ऑब्जर्वेशन और एक बड़ा सीधा सा सवाल है. सर मेरा जो अनुभव है कि एम्स बहुत सारे खुले हैं देश में, वेलकम स्टेप है, लेकिन कोई भी एम्स क्योंकि फुल्ली तरीके से ऑपरेशनल नहीं है, और एम्स का पर्पस ही था कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ और उसको क्योर करने के लिए, तो कोई भी एम्स जिस पर्पस से तैयार किया था वो कैटर नहीं कर पा रही है, तो अल्टीमेटली दिल्ली पे ही क्राउड हो रहा है. तो इंस्टेड ऑफ सारे एम्स को स्टार्ट करके एक एक डिपार्टमेंट्स को डेवलप करने में 10 साल लगाने के बजाय शुडंट वी फोकस ऑन कपल ऑफ एम्स और उसको फुल्ली फंक्शनल करके फिर वी मूव ऑन टू दिस इज माय ऑब्जर्वेशन. चेयरमैन सर, दिल्ली एम्स पर बर्डन बढ़ना और दूसरी एम्स में पेशेंट को आना चालू होना, पेशेंट बढ़ना धीरे धीरे चल रही ये प्रैक्टिस है, व्यवस्था है. आपने जो कहा है कि एक एम्स को फुल फंक्शनल करके दूसरे एम्स को चालू करें, जी नहीं, सभी एम्स को चालू करना है, सभी एम्स में फैसिलिटी बढ़ाते जाना है, सभी एम्स में सुविधाएं उपलब्ध कराते जाना है. कोई एम्स बनते अभी हम उसमें भी एक एम्स बन रही है, उसमें किस किस टाइप के मेडिकल डिवाइस चाहिए, कैसे इक्विपमेंट चाहिए, उसको 2 साल पहले ही असेसमेंट करके उसका ऑर्डर प्लेस कर देते हैं. तब जब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचे तब तक उसमें इक्विपमेंट भी आना चालू हो. डे बाय डे देश का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बर्डन भी बढ़ रहा है. उसके साथ हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को इनेबलर करके एम्स की फैसिलिटी को अच्छी तरह से कैसे चले. फॉर एग्जांपल माननीय चेयरमैन सर, आज एक सामान्य किसी को सामान्य बीमारी है, बात सही है, आपने कहा कि टर्शरी केयर के लिए हमने एम्स बनाई है और सामान्य डिसीज के लिए भी पेशेंट एम्स में चले जाते हैं. गवर्नमेंट फैसिलिटी होने के नाते हम किसी को मना नहीं कर सकते और मना करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सारी एम्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में जोड़ के किसी को कोई भी एम्स की अपॉइंटमेंट लेनी है, कोई एम्स में जाना है, तो वो पहले से एक जगह पे ऑनलाइन रजिस्ट्री कराए और वहाँ से उसको कमांड मिले. कोई पटना के या तो कोई बिहार के पेशेंट ने एम्स में ट्रीटमेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, तो तुरंत ही उसको कमांड मिलेगा कि आपके नज़दीक पटना में एम्स है, वहाँ इतने बेड खाली है और वहाँ आप वहाँ जाइए, वहाँ एडमिशन लीजिए या तो वहाँ ऑपरेशन कराइए, ताकि एक सेंट्रल दिल्ली पर बर्डन ना आए. सभी एम्स में टर्शरी केयर फैसिलिटी उपलब्ध हो. डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डे बाय डे हम एम्स में अपग्रेडेशन कर रहे हैं. Honorable members, 1 second. Honorable members, 1 second. Honorable members, we have a custom of having 5 supplementaries on a question. Since the matter
is connected to health. Lot many members have shown interest. I'll be open to a discussion if a suggestion will come forth. Question number 34, Professor Manoj Kumar Jha. Not present. Honorable Minister. Shri Saket Gokhale. Question number 34. Thank you so much, sir. Sir, several Ayush wellness centers have been opened by the government across hospitals in India. These centers offer alternative treatments, including homeopathy. So there's a huge body of global documented and peer-reviewed work across decades, which shows that there are no results showing that homeopathy is a legitimate form of medicinal treatment. In fact, it is quackery. So, sir, several countries have even banned homeopathy. So on what basis is a quack and untested treatment like homeopathy being promoted in Ayush wellness centers in hospitals over modern science-based medicines across India? Honorable Minister. Respected Chairman, sir. Ministry of Ayush launched centrally sponsored scheme, National Ayush Mission on 15th September 2014 for implementation to the state's duty and for the common people to provide cost-effective and equitable Ayush healthcare, strengthening preventive and promotive aspect in primary healthcare and holistic wellness model, and improve Ayush Educational Institute for imparting quality education. But success story of Ayush Health Wellness Center, in Ayush Health and Wellness Center, all the system of the Ayush, Ayurveda, homeopathy, Unani, Siddha, Suaripa, treatment given to the patients, and success story suggests that the Ayush Health and Wellness Center are providing holistic wellness model on Ayush principle and practice focusing on preventive, promotive, curative, rehabilitative healthcare by establishing integrity with existing public healthcare system. As reported by State UT, footfall on the beneficiary has been increased at the dispensary, which have been upgraded as a Ayush Health Wellness Center to avail different type of facilities like OPD related services, yoga related activity, prakriti, parikshan related activity, counseling, screening, education about preventive aspect of etc., including homeopathy. Some of the states UT are also providing panchkarma related procedure like Ayush Health in Ayush Health and Wellness Center. And these Ayush and Health Center orientation is also being provided about importance of medicinal plant in different type of the component. So all Ayush treatment is beneficial. All the pathies of the Ayush is really beneficial to the patient. Thank you, sir. Shri Niranjan Bist. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ओडिशा में गंधमार्दन पर्वत है जहां 12,000 से ज़्यादा जीवन रक्षाकारी हर्बल मेडिसिन, लाइफ सेविंग हर्बल मेडिसिन मौजूद है और बहुत सारे कंपनी और लोकल वैद्यों को लगा के सरकार के बिना परमिशन से वो लाइफ सेविंग हर्बल मेडिसिन को ले जाते हैं। तो क्या हमारे आयुष मंत्रालय उसका प्रिजर्वेशन के लिए और प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए उस गंधमार्दन पर्वत का लाइफ सेविंग हर्बल मेडिसिन का माननीय मंत्री जी उसका सदुपयोग करेंगे या उसका प्रिजर्वेशन करेंगे? थैंक यू सर। रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, पूरे भारत देश में आयुष की जड़ी बूटियाँ बहुत अच्छी तरह से फैली और ये हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषि मुनियों ने भी यही जड़ी बूटियों का यूज़ करके लोगों को ठीक ठाक करते थे और उसके बारे में नॉलेज भी दिया जाता था। और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के जरिए ये जो कुछ जो हर्ब से जो प्लांट है उसका रिसर्च, इसका सर्वे किया जाता है और जो कुछ है आपकी स्टेट की ओर से प्रपोजल आप हमें भेजना कि आपकी जो कुछ आपके ओडिशा में जो कुछ जो जड़ी बूटियाँ है इसके बारे में हम उसको स्टडी करवाएंगे और उसको जो कुछ देश के लोगों को बेनिफिट पहुंचाएंगे उसके लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। डॉक्टर अशोक वाजपेयी। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा
कि आयुष चिकित्सा पद्धति भारत की बड़ी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और मानने वाले आज से नहीं, हमारे काफ़ी पहले से आयुष चिकित्सा पद्धति पर भारतीय जनमानस का बहुत भरोसा रहा है, विश्वास रहा है। लेकिन आज मैं देखता हूं कि जो आयुष चिकित्सा पद्धति पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन जो दवाएं हमारी बन रही हैं, आयुष की दवाएं, उनकी गुणवत्ता उस कोट की न होने के कारण उतनी प्रभावी नहीं होती। क्या माननीय मंत्री से मैं जानना चाहूँगा कि आयुष की दवाओं के जो हमारी निर्मात्री जो भी फार्मेसीज़ हैं, उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने की दिशा में सरकार कोई कार्रवाई करने जा रही है ताकि हमारी आयुष की गुणवत्ता वैश्विक स्तर पर स्थापित हो सके और हमारी दवाओं का लाभ सारी दुनिया उठा सके। माननीय मंत्री जी। रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया कि आयुष की जो मेडिसिन है उसकी गुणवत्ता के बारे में। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अंतर्गत उसका पूरा अच्छी तरह से परीक्षण किया जाता है और जो फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है, जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक, उसके प्रमाण अनुसार है, प्लस WHO के जो प्रमाण है उसके अनुसार सब आयुष मेडिसिन का उत्पादन किया जाता है, जिससे सब लोगों को ये अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन मिले। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 35, डॉक्टर M. Tambidurai. Question number 35, sir. Honorable Minister. On the table. Supplementary 1, Dr. M. Tambidurai. Sir, I want to know from you, sir, whether a Honorable Minister aware, as per the data released by National Statistical Office, Ministry of Statistics and Program Implementation, the inflation rate is very high during the 4 months, and also the price rose steep for vegetables at 27.6%, pulses 20.7%, spices at 19.7%, and fruits at 11% retail price. Whether the minister knows all this, any steps has taken for that. Honorable Minister. Sir, actually the prices have started coming down and it is well within the tolerance band. Lots of steps have been taken by the government, particularly for meeting the shortage in supply of perishable goods. If you would indulge me a minute, I would just explain in 1 or 2 cases the details to which we have taken steps, and that will be applicable for many others which I will not elaborate so that I don't take the valuable time of the House. So for instance, sir, reasons, of course, I'll start with. One, we don't grow enough of pulses in this country. So pulses prices are normally because of the shortfall in supply, for which, in anticipation, depending on the crop estimates, we start tying up for imports. Now, tuvar dal, sir, has to be imported mainly from Mozambique, Myanmar, Tanzania, Sudan and Malawi, and also Kenya and Nigeria to some extent. We have imported 8.79 lakh metric tons of tuar in the calendar year 2023. So the moment these come, we literally release them in the market, and of course the traders are the ones with permits who import them and also market them. Similarly for masoor, 15.14 lakh metric tons of masoor have also been imported. And this is again calendar year 2023. So similarly for urad, I'll come to talking about onions, sir. 25 kgs at 25 rupees per kg, onions have been ready to release. The total release will be available as of 3rd February 2024. We have released 3.96 lakh metric tons of onions in the market at that price of 25 rupees per kg. Now, import restrictions have also been made so that India-grown onions, well, it does mean a certain kind of implication on the farmer because he gets better price selling outside, but because we want onions to be available in India, we have curtailed their exports so that the prices can be
kept within a reasonable limit. Similarly, I did tell about the dal. We've also got a branded Bharat dal through which chenna is made available at 60 rupees per kg for 1 kg packs, or 55 rupees per kg for 30 kg packs. So literally 2.97 lakh metric tons of chenna have been sold already by 31st January 2024 at that price, and which is therefore an effort as a result of the effort that we've taken. And these Bharat Dal, branded dal, which is coming at a concessional price, is available in ONDC, in Blinkit, JioMart, and all other big retail outlets. So such steps have been taken for tomatoes and others as well. So not only is the government seized, as the honourable member is saying, of the difficulties which arise due to perishable or commodities which are not grown in India, a committee sits, reviews periodically, and efforts have shown result on the ground that the inflation level is now within the tolerable band. Dr. M. Tambidrai. Thank you very much for the minister's reply, sir. The another thing, reasons for the retail price is the price of the diesel and petrol. Government is taking, central government reducing the price. I want to know from Honorable Minister whether this government is directing like state governments like Tamil Nadu, which promised in the election to reduce the price, not yet reduce the petrol VAT price. Whether the government will aware and direct the Tamil Nadu government, which promised the election manifesto to Honorable Minister. Further. That is I want to know. Sir, the Honourable Member has raised a very important question, sir. I'll just go back for a minute to say how the central government has reduced the central excise duty on petrol and diesel by 5 rupees per litre and 10 rupees per litre, respectively, in November 2021. And again in May 2022, central excise duty on petrol and diesel was reduced by 8 rupees per litre and 6 rupees per litre, respectively. Over and above this, for cooking gas, 300 rupees subsidy is being given on the 14.2 kg cylinder for up to 12 refills that people might take. For all 12 refills, this is being given. So central government is constantly taking steps to make sure that we give the necessary subsidy, we reduce the price where it is possible, and therefore to reduce the burden on the common citizen. As for the state governments, sir, we can only request that all the country, all citizens be treated equally, and therefore such a reduction be taken up by the respective state governments. But it gets reflected in the fact that the inflation within that state remains high because of not reducing such prices where it is possible for state governments and the central government to reduce. At best, we can only, with such voices, there are a few states who have not done it, their citizens bear the brunt, and that has to be made very publicly aware. Sri Praful Patel. Retail inflation has been largely kept in check in the last many years, and I must compliment the Honourable Finance Minister and the government for having maintained a reasonable degree of inflation levels commensurate to the rising income levels of people in the country. But there are a few items sometimes which become very sensitive, and she just was replying to my colleague's question about onions. I must also say that onions have always been like a very sensitive and a politically touchy subject, because at times the prices really come down because of overproduction. Sometimes it's the other way around because of shortages, the prices go the other way around, and the farmers usually react very, I would say aggressively compared to many other crops. My request to the Honourable Finance Minister is that there are some countries where there are, onion grower, I would say, it's not like a cooperative, but they are like organizations which monitor, and nowadays we have much more access to scientific data where we can monitor the production levels
as well as, the kind of crop patterns which will be over a period of time, sowing and so on. So if we can find a much more stable mechanism, you are buying through NAFED and other organizations to stabilize the prices for the farmers. Sometimes we have exports of onions which we suddenly ban, suddenly we allow exports. This kind of uncertainty creates this kind of a situation. May I ask the Minister whether she has any thoughts on this? Honorable Minister. Presently, we have only steps which are being taken so that the preservation of very highly perishable commodities like onion can be bettered. So using gamma rays on which the BRC is working, Baba Atomic Research Center is working with government so that we are able to I don't know if I'm using the right expression, dehumidify it, remove the humidity content in it by using gamma rays, and then give it a longer shelf life. So steps like this are being considered. I'm not sure whether there's any attempt to have a, exchange of ideas between the different federations or organizations of onion growers that may exist in different countries. I'm not very sure on that. But fact remains that efforts for giving a longer shelf life is being taken care of. And even as I gave the answer to Honorable Member Tambidurai, the concern of onion growers as opposed to the concern of onion consumers has always been a very fragile, if I may say so, or a very delicate issue. Because the moment you keep the consideration of the consumer in mind, the farmers do have a problem because exports do fetch good price. I'm conscious of that. But Honorable Minister is favorable to consideration of the idea? Well, a very valuable suggestion, sir. I'll certainly take it on and pass it to the concerned minister. Srimati Sulata Dev. थैंक यू चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ, अगर हमारे देश में वन नेशन वन जीएसटी का प्रचलन हो रहा है तो फिर वन नेशन वन इनकम टैक्स का प्रचलन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये ओल्ड रीजन और न्यू रीजन का जो कन्फ्यूजन है वो 3 करोड़ 4 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं, फिर भी वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। इसको सरलीकरण कब किया जाए? अगर कोई व्यवस्था है कि ये ट्रांजिट पीरियड तो 3 साल हो गया, 1 साल 2 साल में हो जाता है, मगर ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर कोई ऐसा प्रावधान है कि ये इसको भी वन नेशन और वन इनकम टैक्स में ला सकते हैं क्या? अगर है तो बताइए प्लीज। नमस्ते। Honorable Minister, beyond technical aspect. I know, sir, but the question, of course, pertains to inflation and so on. But certainly the issue that the Honourable Member is raising, that if we could do it for indirect taxes, why not for direct taxes, is a worthy issue on which I'm willing to debate anytime she and you would want me to come and talk about it now. Dr. Fozia Khan. In the current scenario, I would like to ask the Honourable Minister, with e-commerce gaining momentum and retail inflation showing rise, is the government considering technologically aligned solutions to access the impact of these services? How does the government plan to navigate the fluctuations in retail inflation concerning these emerging e-commerce trends of higher shift and more reliance of these services in the urban setup? Honourable Minister. So pardon me, sir, can I have the question repeated? Fozia Khan. Ma'am, I'm talking about technologically aligned solutions to e-commerce, considering the rising trends in inflation. So does the government plan to navigate the fluctuations in retail inflation concerning these emerging e-commerce trends? It's a very pertinent question, so much for the process of monitoring inflation. The discussion pertains to inflation and the brunt being borne by the consumers and the brunt being borne by the farmers, particularly in the case of onions, as we spoke about, because the price affects one the one way, the other way. But certainly the process of monitoring inflation and the basket, and within the basket the items and their weightages, are issues which are being discussed not just for the e-commerce or the technology digital-driven prices,
but the components which go into items which constitute the CPI basket or which constitute the WPI basket, and each item's weightage within that basket are things which have to be discussed in the Ministry of Program and Statistics and Program Implementation, MOSPI as it is briefly referred to. It's a very critical question, sir, but I'm sure the MOSPI will be seized of it. Question number 36, Shri Shakti Singh Gohil, not present. Honorable Minister. ऑर्डर पर रखा दिया सर. Shri Rakesh Sinha. सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बरौनी में जो फर्टिलाइजर की कंपनी है, क्या उसमें नैनो उत्पादन के लिए व्यवस्था की जाएगी? ऑनरेबल मिनिस्टर महोदय, अभी तक तो ऐसा कोई वहां पर हमने कोई निर्णय नहीं लिया. किया है सर. क्वेश्चन आवर ओवर. की है सर. Motion for suspension of Rule 17, Shri Prahlad